Yes, very good evening to all of you, my dear students. Very good evening to everyone. So yesterday we have started discussing on that whether the DPSPs are superior than fundamental rights or whether the fundamental rights are superior than DPSPs. So that was the discussion that we have done yesterday, right? जिसमें मैंने आपको बताया था that we cannot say that DPSPs are superior than fundamental right. Rather, DPSP and fundamental rights are complementary to each other. Right? यहाँ पर DPSP और fundamental rights are at the same level, at the equal footing. DPSP is basically governance के लिए है, right? और fundamental rights basically protection के लिए है. तो मैंने आपको ये भी बताया था कि DPSPs are positive rights, right? Which is the basically duties of the state to do something, whereas fundamental rights are negative right. The state has to restrain from doing something कि मैं आपका राइट वायलेट नहीं करना चाहिए मुझे. तो वहां एक नेगेटिव राइट है, फंडामेंटल राइट एक तरह से कि हमें रिफ्रेन करना है. और डीपीएसपी एक पॉजिटिव राइट है जिसमें आपको कुछ करना होता है, राइट? ओके, पॉलिसीज बनानी है. बट क्वेश्चन उठता है कि फंडामेंटल राइट्स तो एनफोर्सिएबल है, बट आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी तो अनएनफोर्सिएबल है. अब क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज अनएनफोर्सिएबल? Because I have told you that lack of resources. We do not have that much of sufficient resources right now. कि अभी हमारे पास वो sufficient resources नहीं है जिसकी वजह से हम क्या कर सके, हम वो क्या नाम है, डीपीएसपी को एनफोर्स कर सके. क्योंकि अगर इसे एनफोर्सेबल कर दिया तो कोई ना कोई पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग. की गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, ये हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, बट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा. बट ये जो डीपीएसपीज हैं, ये नो डाउट गवर्नमेंट को कुछ ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डू नॉट हैव द resources. There is unavailability of awareness, right? Unavailability of resources, the societal perception. तो ये हमारा कल का डिस्कशन था, है ना? इस पे मैंने कुछ लिखवाया तो नहीं था? टेल मी, जस्ट गिव मी 1 मिनट. पे लिखो द इशू इन केशवानंदा भारती केस. द इशू इन केशवानंदा भारती केस, मैंने के भी लिखा है, केशवानंदा भारती केस, regarding the 25th amendment. Regarding the 25th amendment was that just was that the DPSP are not enforceable whereas fundamental rights are enforceable. Whereas fundamental rights are enforceable. Then how can article article 39C and 39B be given a superior position, be given a superior position, be given a superior position upon articles, upon article 19 and 14. Next para. The court held that first
the fundamental rights are more or less, the fundamental rights are more or less negative rights. Negative rights, more or less negative rights in the form of negative duties. Negative duties upon the state. Upon the state. Upon the state. The state cannot violate, the state cannot violate fundamental rights of individuals, whereas the DPSP, are in the form of positive rights, are in the form of positive rights, and they cast a positive duty, and they cast a positive duty upon the state. Positive duty upon the state. Full stop. The DPSPs are larger socio-economic goals, of constitution. The constitution is said to be a first and foremost. The constitution is said to be the first and foremost a social document, and the DPSP contains this character, of socio-economic revolution, ठीक है? Next point. The fundamental rights and the DPSPs cannot be seen in isolation. Rather, both of them are complementary to each other. Rather, both of them are complementary to each other, and both are to be seen, in light of each other,
each other. The DPSPs, full stop, the DPSP are the larger goals, whereas the fundamental rights, are the means, of attaining that goal. ठीक है कि डीपीएसपी जो है, हालांकि हमने अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे हम। अभी मान के चलो डीपीएसपी क्या है कि स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो बेसिकली स्टेट के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे स्टेट का उद्धान हो। उद्धान समझते हो आप? प्रोग्रेस हो, राइट, बेनिफिट हो सोसाइटी का। तो ये डीपीएसपी ये बहुत बड़े गोल हैं जो हमें अचीव करने, बट वो अचीव कैसे करेंगे? ये फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो गए तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी भी कर्टेल होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट कर्टेल होगा, वायलेट होगा, तो डीपीएसपी भी वायलेट हो जाएगा। तो ये जो लार्जर गोल्स हैं इसको हम कैसे अटेन करेंगे? ये फंडामेंटल राइट के द्वारा ही करेंगे। समझ में आया? चिराग, दीपांशी, दिया, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया। शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, दिया ठीक है, चिराग ठीक है, यस, गुड। एक और पॉइंट लिख लो। क्या लिखा है? अटेनिंग दैट गोल। एक और पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। बाय मेकिंग फंडामेंटल राइट्स, ये कुछ हो गया है इसकी ना, नेप को, पेन की नेप को ढंग से लिख नहीं रहा है। बाय मेकिंग फंडामेंटल राइट enforceable and DPSP not enforceable, the framers of constitution have not aimed at giving the fundamental right, aimed at giving the fundamental right a superior position. The DPSP were declared non-enforceable not because they are less important, not because they are less important, rather because for implementation, of DPSP, the availability of circumstances and resources are required, full stop. The DPSP are such as good
as good been implemented only, as good been implemented only when the circumstances are available, when the circumstances are available. ठीक है, तो बेसिकली डीपीएसपी कब आपका इंप्लीमेंट होगा? जब सर्कमस्टांसेस अवेलेबल हो, जब रिसोर्सेज अवेलेबल हो। बट रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है तो कैसे करेंगे? इज इट क्लियर? समझ में आया? यस एवरीवन? रूपल ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? दिया ठीक है, लिख रहे हो ना? आज लिखवाना काफी है मेरे को, ये मैंने कल ही बोला था आपको, कल बोला था क्लास में कि आज लिखवाना है, तो आज लिखवाना काफी है, इसको लिखो आगे। हैड इट बीन डिक्लेयर्ड, नहीं इसी का कंटिन्यू, हैड इट बीन डिक्लेयर्ड टू बी एनफोर्सिएबल, to be enforceable, individuals may have filed a writ for enforcing this, whereas immediate circumstances, whereas immediate circumstances may not have been such, may not have been such as could be suitable for enhancing DPSP, for enhancing the enforcing, for enforcing DPSP. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखना, आर्टिकल 37 डिक्लेयर्स, Article 37 declares the DPSP not to be enforceable, but at the same time, it also declares that this DPSP shall be fundamental in governance, and that the state shall implement, and that the state shall implement the DPSP through lawmaking, full stop. This highlights the fundamental importance of DPSP, and the fact that
and the fact that both fundamental right, both fundamental right and DPSP are equally important, and it is complementary, and it is complementary and it is complementary of two, that is designed to be the chief instrument, that is designed to be the chief instrument, of social change, and to attain the welfare, and to attain the welfare goals of constitution. ओके, एक और छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, फिफ्थ पॉइंट, the harmony and balance between the fundamental right, all right Dipanshi, between the fundamental right and DPSP is a part of basic structure of constitution. ठीक है, so basically the harmony and balance between the fundamental right are the it is the part of basic structure, कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी है, देयर इज नो यू कैन से conflict between the two, rather since they are equally important, there is a harmony, and this harmony is also the part of basic structure. समझ में आया? कुछ थोड़ा समझ में आया, पूरा समझ में आया? लगभग पूरा आ गया. Online students, if it is clear, give me a thumbs up. चिराग, दिया, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया. रूपल ठीक है, प्रिया ठीक है, सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, दिया, चिराग. Yes, Miss Sir, first point if you can show. Yes, why not? लो बेटा, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ये है, आप इसको जूम इन करके स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, आगे बढ़े हम. Shall we proceed? ले लिया आपने दिया? If yes, give me a thumbs up. Okay, good. Now, अब देखो ये है क्या है इसमें बेसिकली कि आपका आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, राइट? आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, राइट? 32 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट. बट हम ये कब जाते हैं? जब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो, है ना? कि जब फंडामेंटल राइट वायलेट हो, उसको एनफोर्स करवाने के लिए हम आर्टिकल 32 या 226 जाएंगे. बट अगर हम आर्टिकल 37 की बात करें, आर्टिकल 37 डीपीएसपी है, ये बात करता है दैट नॉन एनफोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सिएबल, डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सिएबल, और ये एनफोर्सिएबल है, ये एनफोर्सिएबल है, ये नॉट एनफोर्सिबल है.
यहाँ पे दे हैव अ पॉजिटिव ड्यूटी, यहाँ पे दे हैव अ पॉजिटिव ड्यूटी, राइट। और यहाँ पे दे हैव अ नेगेटिव ड्यूटी। ओके, यहाँ पे दे हैव अ नेगेटिव ड्यूटी। अब यहाँ पर ओवर हेयर दे आर डूइंग समथिंग, कि इनको कुछ करना है, राइट। ओके, डूइंग समथिंग, और ये कौन कर रहा है? बाय द स्टेट। ये हम इंडिविजुअल्स नहीं कर रहे हैं, समझो इस बात को। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये स्टेट कर रहा है, राइट। ओके, और यहां पर क्या है? दैट इट इज, देयर इज अ स्टेट विल रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि स्टेट ऐसे लॉ पास नहीं करेगा जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो। ठीक है, तो यहां पे स्टेट रिफ्रेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग। इज इट क्लियर? तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि स्टेट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे, सारे डीपीएसपी को एक बारी में इम्प्लीमेंट करे। वो धीरे 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 इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ना। अगर आप डीपीएसपी की बात करते हो, निकालो डीपीएसपी, टेक इट आउट। ऑर्डर, ऑर्डर कह रहा हूँ, आर्टिकल 39 देखो। ये कह रहा है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कि स्टेट को ये करना चाहिए, राइट। अब देखो आगे लिखा है, द स्टेट शैल, शैल मीन्स मैंडेटरी, in particular direct its policy towards securing that the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood। स्टेट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि जो मेंस हैं वुमेन्स हैं उनको लाइवलीहुड मिल सके। बट अगर मैं इसको एनफोर्सिएबल कर दूं और स्टेट नहीं करे, तो मैं तो सीधा कोर्ट पहुंच जाऊंगा कि भाई स्टेट को तो करना चाहिए। बट स्टेट बोल रहा है भाई साहब मेरे पास रिसोर्सेस कहाँ है कि मैं आपको कर सकूं, अभी नहीं है, आगे चल के आ सकता है, बट मैं धीरे 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 ट्राई कर रहा हूं। तो ये डीपीएसपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी फंडामेंटल। तो ये डीपीएसपी फंडामेंटल राइट दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। इसका एक और चीज पढ़ो, इसका पढ़ो आप, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये भी डीपीएसपी है, कि जो वर्क करना है, अगर मेन को 500 रुपए मिल रहे हैं तो वुमेन को भी 500 मिलने चाहिए। और अब तो लॉ पास हो रहा है इसका, बट पहले नहीं था, राइट। तो लॉ पास करते हुए द स्टेट शुड कंसीडर डीपीएसपी, बट इट कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल। अगर कोई लड़के को 500 रुपए मिल रहे हैं कोई काम करने के लिए, और वहीं कोई लड़की है उसको 300 रुपए मिल रहे हैं काम करने के लिए, तो शी कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ डीपीएसपी। बट अनबायसनेस के लिए तो जा सकती है वो, पार्शियलिटी के लिए जा सकती है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए जा सकती है, बट डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकती। समझ में आ रहा है आपको? टेल मी। शी कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट की स्टेट की ड्यूटी है कि हमें इक्वल मिले, बट वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए जा सकते हैं कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आर्टिकल 15 वायलेट हो गया, राइट। बट डीपीएसपी नहीं हो सकता। अब डीपीएसपी और स्टेट बोल रहे हैं अरे मेरे पास रुक जाओ, मेरे पास संसाधन नहीं है कि मैं आपको भी दे सकूं, बड़ी मुश्किल से आपको जॉब लगवाई है, करूंगा वो भी करूंगा, राइट। समझ में आया? इज इट क्लियर? चिराग, दिया, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि स्टेट सारे डीपीएसपी को एक बारी में इंप्लीमेंट कर दे। अब और देखो आप, चलो और देखना है तो ये देखो, ये कह रहा है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, राइट। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो फ्री लीगल एड अब हम दिल्ली में कर रहे हैं, राइट, यूपी में कर रहे हैं, बट क्या पता कि किसी गांव में फ्री लीगल एड नहीं करवा पा रहे हो।
लीगल एड मतलब हेल्प, एडवाइस। जैसे कॉलेजेस क्या करते हैं, अपने कैंप लगाते हैं अलग अलग गांव में जाके कि आपको कुछ अगर वो चाहिए, क्या नाम है, लीगल एडवाइस चाहिए, तो हमसे मिले, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको लॉयर दिलवाएंगे जो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये क्या है, ये भी तो एक डीपीएसपी है, बट इसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। राइट, एनफोर्सिबल, ये एनफोर्सिबल नहीं है, इंप्लीमेंट कर सकता है को, स्टेट चाहे तो बना सकता है और बनाना चाहिए, बट आप इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। समझ में आया? चिराग, दिया, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया, क्यों नहीं कर सकता स्टेट? अभी इंप्लीमेंट की बात कर रहा हूं, एनफोर्सिबल क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी चीज रिसोर्सेज नहीं है। राइट, ओके। जैसे अगर मैं घर पे बोलूं कि मम्मी या पापा मुझे बैग खरीदना है क्रिकेट के लिए, तो पापा बोलेंगे बेटा इस बार तो बोनस मिला नहीं, पापा बोलेंगे बेटा इस बार तो इंश्योरेंस करवाना है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है, या बोलेंगे बेटा मेरे को तो इस बार यहाँ कमेटी की वो देनी है ना, हो सकता है। तो ऐसे ही हमारा स्टेट भी अभी नहीं है, बट आगे चल के करेंगे, आगे चल के बैग दिलवा देंगे। राइट, so that reminds me that when I was, I believe, सेवेंथ स्टैंडर्ड, सेवेंथ या एट्थ स्टैंडर्ड, तो मेरे को स्केट्स चाहिए थे। स्केटिंग, स्केटिंग समझते हो, स्केट्स? राइट, तो आई वॉज अ नेशनल चैंपियन अपने टाइम पे, 2008 या 9 की बात है। ठीक है, तो स्केट्स चाहिए थे मुझे, मैंने डिमांड कर दी, पापा बोलते ठीक है करेंगे। अब मैं रोज पूछूं, रोज पापा टाल दे, मेरे को समझ में नहीं आए। तो होते हैं फाइनेंशियल, बट बाद में फिर स्केट्स दिलवाए, और जब स्केट्स आए तो आई डिड वंडर्स, आई डिड गुड, आई बिकेम नेशनल चैंपियन। राइट, तो अभी फिलहाल नहीं है, बट आगे करेंगे। राइट, तो ये डीपीएसपी का बेसिकली इंटेंशन है कि इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेलफेयर स्टेट। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है स्टेट की टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज इन ऑर्डर टू हैव अ वेलफेयर स्टेट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मेरे पापा मेरे को स्केट्स नहीं दिलवाते, तो मेरे तो हेट्रेड बढ़ता ना पापा के प्रति, कि यार ये चीज तो गलत है, पापा तो अपनी जॉब पे जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे को स्केट्स दिलवाते नहीं है। बट थोड़े समय बाद स्केट्स दिलवा दिए, तो आई वॉज हैप्पी। राइट, ऐसे ही आपका भी इंस्टेंस रहे होंगे कि आपने कुछ डिमांड करी हो, शायद उस टाइम पे नहीं मिला हो, बट बाद में मिल गई हो। राइट, इज इट क्लियर? सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द स्टेट, कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, बट आप इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते अभी फिलहाल। आगे चल के क्या पता हम एकदम डेवलप्ड नेशन हो जाए, वहां हो जाएगा, तब हो जाएगा क्या नाम है, ये चीज एनफोर्सिएबल। समझ में आया? इज इट क्लियर? चिराग, दिया, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया, सो आई डू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, माय पर्सनल थिंग्स इन द क्लास। राइट, ये कुछ बनावटी नहीं है, कुछ कुछ बनावटी होती, कुछ नहीं होती, क्योंकि मेरे को लगता है कि यू ऑल, वी ऑल आर वन फैमिली, एंड वी शुड नो। राइट, कि अगर आपको कोई डाउट, कोई इशू है, कैसा भी इशू है, यू शुड फील फ्री टू टॉक टू मी, एंड आई वुड बी गिविंग एन एडवाइस दैट व्हाट यू शुड बी डूइंग। व्हाई? बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू योर एज, जिस एज में हूँ मैं भी था, शायद जिस प्रॉब्लम में हूँ शायद मैं भी हूंगा। राइट, एनीवेज आगे चलते हैं। अब देखो, डीपीएसपी, एक और मैं लाइन लिखता हूं, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डीपीएसपी कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट फंडामेंटल राइट। क्या ये सही लाइन है या ये फॉल्स है? इज इट ट्रू और फॉल्स? टेल मी, इज इट ट्रू और फॉल्स? DPSP cannot be attained without fundamental rights. अटेन मतलब नहीं ले सकता, आप नहीं कर सकते, आप अपना नहीं सकते। दिया says true. Okay, what about others?
रूप सलोनी गिव्स अ थम्स अप। अब देखो ये जो डीपीएसपी है ये पॉजिटिव असर्शन है, राइट। और अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, फॉर एवरी राइट देयर इज अ कोरिलेटिव ड्यूटी, वेट दिया, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो वहां पर क्या है, दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, राइट। स्टेट शैल क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर देयर शैल बी नो इनइक्वालिटी, कि स्टेट ऐसा एनवायरमेंट बनाए जहां पे इनइक्वालिटी ना हो, जहां पे सब इक्वल्स हो, राइट, एवरी वन विल गेट इक्वल बेनिफिट। अब जैसे मैंने अपनी क्लास में क्या बना रखा है कि मैं पार्शियलिटी नहीं करता, ऑफलाइन और ऑनलाइन, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं सब पे ही ध्यान देता हूं, राइट। तो ऐसे ही द स्टेट शैल क्रिएट सच एन एनवायरमेंट वेयर there shall be no inequality, rather everyone shall be treated equally. So there is a positive duty towards the state has the positive duty towards the society, right? Is it clear? तो हमारा ये जो डीपीएसपी है ये बेसिकली मैं बोल सकता हूं हमारा मेन गोल है। मेन गोल मतलब मेन एम, मतलब हमारे सपने हैं। लेमन लैंग्वेज में ये समझो कि डीपीएसपी हमारा मेन गोल है जो हमें अचीव करना है। जैसे आपका एम क्या है, जुडिशरी। अब आप उसको कैसे अचीव करोगे, पढ़ के करोगे, राइट। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये हमारा क्या है, ये पाथ टू मेन गोल है, ये जरिया है हमें हमारा गोल लेने में, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या है, ये पाथ टू मेन गोल, कि अगर फंडामेंटल राइट हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं तो हम अपना मेन गोल अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका मेन गोल है जुडिशरी, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज द पाथ टुवर्ड्स द जुडिशरी। अगर आप पढ़ते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो यू विल वन डे अचीव योर एम। इज इट क्लियर? सो देयर शैल बी एन हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो मैं कहां पर था कि डीपीएसपी सुपीरियर है, फंडामेंटल राइट इंफीरियर है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी या सब क्लॉज सी कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि प्रॉपर्टी को कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, हर जगह इक्वली बंटना चाहिए, राइट। और वहां उसके लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो चाहे आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हो कोई मतलब नहीं, आर्टिकल 31 सी के तहत दैट लॉ विल बी वैलिड लॉ। तो मैंने कहां पर स्टार्ट करा था कि वो सुपीरियर एक तरह से है और ये इंफीरियर है, बट ये सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। समझ में आ रहा है आपको? मेरी स्टोरी लाइन समझ में आ रही है? चिराग, दिया, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को भी ना आप एक तरह से स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैंने सुपीरियर बताया, फिर मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट्री बताया, अब मैं बता दिया कि ये दोनों इंपॉर्टेंट इतने हैं कि एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, राइट। दिया समझ में आया आपको? चिराग, शैली, प्रिया। दिया ठीक है, रूपल ठीक है, चिराग ठीक है। तो हमारे यहाँ पे उस समय पर प्रॉपर्टी एक्वायर करना वाज वेरी वेरी, आई वुड से एसेंशियल, जरूरी था। क्यों जरूरी था? डेवलपमेंट के लिए, राइट। बट आज के टाइम पे मैं देखूं कि आप बड़े बड़े स्टैचूज बना रहे हो, क्या वो जरूरी है? इज इट एसेंशियल? व्हाट इज रिक्वायर्ड? कि भाई प्रॉपर पुलिसिंग हो। कल वहां पर 100 लोग से ज्यादा लोग मर गए। कहां पर मर गए? टेल मी। मथुरा के पास एक जगह है हाथरस। हाथरस में 100 लोग से ज्यादा लोग गैदर हुए, कहां पर? एक बाबा का वो देखने के लिए। तो स्टेट को पहले से ही पता था कि यहाँ पे एक आयोजन होने वाला है। तो रिक्वायर्ड क्या था कि अगर बाई चांस भगदड़ हो, स्टैम्पेड हो, लोग आराम से जा सके।
इतने लोगों को आपने अलाउ ही क्यों करा इकट्ठा होने के लिए? और अब ये सब छोड़ो, मोदी जी के जो वो होती हैं, क्या नाम है, सभाएं, वहां पे इतने लोग आते हैं, बुलाया जाता है बल्कि, आई वुड से, राइट? तो ये जो आप स्टैचूज बना रहे हो, दैट मे नॉट बी एसेंशियल राइट नाउ. व्हाट इज एसेंशियल? आई शुड गेट अ क्लॉथ, आई शुड गेट फूड, आई शुड गेट अ गुड एजुकेशन, आई शुड गेट अ मेडिकल थिंग. बट आप मुझसे टैक्स ले रहे हो, बट आप मुझे फ्री एजुकेशन नहीं दे रहे हो. मुझे कोचिंग संस्थानों की जरूरत पड़ रही है, जैसे आप मेरे पास आए हो, राइट? अगर इफ दे हैव डन गुड, तो कॉलेज में आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जा गया होता. बट व्हाई यू हैव नॉट स्टडीड ओवर देयर? व्हाई? बिकॉज द टीचर्स ओवर देयर आर अनपेड, राइट? तो मैं कहां से कहां चला गया. बट यस, द इंटेंशन ओवर हियर इज दैट DPSP should be followed. Is it clear? Tell me, my dear students. मैं बता क्या रहा था कि प्रॉपर्टी चाहिए थी हमें, है ना, कि वो एसेंशियल था, दैट वाज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट. बट अगर मैं आज की बात करूं कि प्रॉपर्टी तो चलो ठीक है, उन्होंने अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लिया, बट और भी रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी रिक्वायर मेडिकल असिस्टेंस, we require education reformation, right? Okay, these are the basic things. And third, the policing, police force, right? चलो इस पे एक पॉइंट लिखवाता हूं आपको, राइट इट डाउन. द कोर्ट हेल्ड दैट, ये डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स का ही बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए भी लिखवा रहा हूं बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू फ्रेम योर आंसर्स. ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सुपीरियर है, क्या इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है भी या नहीं, तो यू शुड बी एबल टू राइट गुड आंसर्स. ठीक है? इज इट क्लियर? तो इसमें लिखो, द कोर्ट हेल्ड since since the fundamental rights and DPSP have to be read, as harmony with each other, as complementary to each other, as complementary to each other. The approach should be to do, the approach should be to do harmonious reading, to do harmonious reading of two, and if there is found, and if there is found to be some conflict, found to be some conflict between fundamental right, and DPSP, then the conflict has to be resolved, in a practical manner, in a practical manner, so as to serve the larger goals, so as to serve the larger goals of constitution. There is no conflict, there is no conflict between
Article 39 clause B and clause C, comma, on one hand, Article 14 and Article 19, to the other hand, on ये मैंने आपको लिखवाया, there is no conflict between Article 19B and C on one hand, कॉमा हटा दो इसको, on one hand, इसको यहाँ लिखो, and Article 14 and Article 19 to the other hand. ठीक है, to the other hand, it is promoting Article 39 clause B and C is indispensable. Dispensable मतलब absolute necessary. Okay, indispensable मतलब absolute necessary, is indispensable मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता, is indispensable for the attainment of larger goals of the Constitution. Therefore, to the extent of such conflict, Article 39B and C can be made encroach upon Article 14 and 19, and hence the 25th Amendment is not unconstitutional. ठीक है, तो 25th amendment is not unconstitutional. All right, Saloni, I will dictate that also. एक बार इसको लिख लो. Done writing? Yes, all of you please tell me. Done? चिराग, दिया, रूपल, ठीक है. अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ. There is no conflict between Article 39B and C. अब इसको ऐसे करना, on one hand, ये हटा दो, on one hand Article 14 and Article 19, to the other hand, promoting Article 39B and C is indispensable. लिखवाया है मैंने ये सलोनी. Indispensable मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता. This is absolute necessary. Okay, Saloni? Indispensable for the attainment of larger goals of the Constitution. Okay. अब आगे चलते हैं. अब एक और केस लॉ लिखो, आपने ये भी सुना होगा, दैट इज मिनर्वा मिल्स लिमिटेड. सुना है ना? वेरी गुड. तो ये भी केस लॉ लिखो, दैट इज
मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट. It was 5 judges bench. It was 5 judges bench and delivered by Y.B. Chandrachud, Chief Justice, CJ. तो यहां पर in this case 42nd Amendment Act was in question. In this case 42nd Amendment Act, that was in question. Challenge कह लो, that was challenge. अब 42nd Amendment Act आया था 1976 में. 1976 में आपको याद होगा. यू प्लीज टेल मी. चलो मैं आपसे पूछता हूँ. 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने बहुत सारी चीजें ऐड करी थी. उनमें से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट है, बता दो क्या है. और अच्छा, और शेली से आर्टिकल 39A, सलोनी से फंडामेंटल ड्यूटी. ओके, और सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, प्रिएम्बल. ओके, तो ये मेरे को लगता है दिस वी विल डिस्कस टुमारो, राइट. टेल मी, शुड आई डिस्कस इट राइट नाउ और शुड आई डिस्कस इट टुमारो? आज के लिए ज्यादा तो नहीं हो गया? बताइए, टुडे और टुमारो. टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स. आज बच्चे भी ज्यादा नहीं है, बट कोई बात नहीं. यस मिस्टर चिराग, दिया, रूपल, सलोनी. शैली सेज टुमारो. ओके, सलोनी सेज टुमारो. ओके, दिया ने थम्स अप दिया. थम्स अप से क्या समझू मैं? टुडे और टुमारो. दिया, यू मे हैव टू राइट, है ना. प्रिया सेज टुमारो. ये सब बच्चे टुमारो बोल रहे हैं. देखो, कभी कभार मेरे को लगता है कि शायद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता होगा, तो इसलिए आई विल ऑल्सो बी स्टॉपिंग इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज देर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग यू स्टडी मोर, राइट. क्योंकि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 42nd अमेंडमेंट आ गया, मिनर्वा मिल आ गया, राइट. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें देखना है कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा या नहीं होगा. This we will discuss tomorrow, right? Now tell me, do you have any doubt or any questions in today's class? Is it clear? If it is clear, give me a thumbs up. शैली ठीक है, दिया ठीक है, प्रिया ठीक है, सलोनी ठीक है, चिराग ठीक है, रूपल ठीक है. वेरी गुड, very very good. Let me close this recording. Thank you so much. God bless you. Thank you.